Hello guys, welcome back to my channel. Sorry for uploading a video after a long time. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है सेडिशन, सेक्शन 124A ऑफ IPC। तो मैंने इस वीडियो का टॉपिक एबेयंस ऑन सेक्शन 124A इसलिए रखा है क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, या ये कह सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन लगा दिया है इस सेक्शन पे। इज मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज मीनिंग ऑफ सेडिशन। Sedition means conduct or speech inciting people to rebel against the authority of a state or a monarch. Section 124A IPC defines sedition as whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law, India, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. अगर इसको सिंपल वे में समझे तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी स्प्रेड करना जिससे ये लगे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप हेटरेट स्प्रेड कर रहे हैं, चाहे वो ओरली हो, बाय वर्ड्स, या फिर रिटन हो, लिखा हुआ। और इसकी पनिशमेंट या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, उम्र कैद की सज़ा, या फिर 3 साल, और उसमें फ़ाइन एडेड रहते हैं, इनमें से जो भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है। Moving on to our next slide which is recent case law, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक रिसेंट केस लॉ है 2012 का, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि मेयर एडवोकेसी और डिस्कशन इज़ नॉट सेडिशन। अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ डिस्कस कर रहे हैं या कुछ भी अपने पॉइंट्स रख रहे हैं तो उसको सेडिशन में काउंट नहीं किया जाएगा। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ हाउ मेनी सेडिशन केसेज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब यहाँ से क्या है, हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट करंट ऑर्डर पे जाएंगे। According to Congress leader and senior advocate Kapil Sibal, who is appearing on behalf of petitioners in the top court, there are over 800 sedition cases filed across India. 13,000 people are in jail, he said. Sibal argued that the sedition law should be scrapped. According to data by the News and Research website, Article 14, 6 sedition cases were filed during the farm protest and 25 during the anti-CAA protests. According to the Home Ministry data, a total of 326 cases were registered under the sedition law between 2014 and 2019, with the highest 54 cases in Assam. Charge sheets were filed in 141 cases, while 6 people were convicted for the offence over 6 years. कपिल सिब्बल जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो पेटिशनर्स के बिहाफ में टॉप कोर्ट में अपियर हो रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि 800 सेडिशन केसेस फाइल किए गए हैं पूरे इंडिया में और 13,000 लोग जेल में हैं। कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए। और अगर डेटा या न्यूज़ रिसर्च की बात की जाए तो 6 सेडिशन केसेस फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे फाइल किए गए हैं और 25 सेडिशन केसेस एंटी-CAA प्रोटेस्ट के टाइम पे फाइल किए गए हैं। और होम मिनिस्ट्री डेटा के हिसाब से टोटल 326 केसेस 2014 से 2019 के बीच रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 54 केसेस असम के थे। और चार्ज शीट्स फाइल किए गए हैं 141 केसेस के, जिसमें 6 लोग 6 साल से कन्विक्टेड हैं। Moving on to our next slide, which is Sedition Challenge. Supreme Court's historic order on sedition law. Abeyance on Section 124A IPC. While temporarily suspending the colonial era sedition law, the Supreme Court said that those already booked under Section 124A of the IPC are in jail can approach the courts for bail. In a historic order, the Supreme Court on Wednesday stayed the country's colonial era sedition law and allowed the centre to re-examine and reconsider provisions of Section 124 of the Indian Penal Code. The top court said
that until the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under IPC 124, which deals with punishment for sedition offences. The order comes after the centre, which was defending the sedition law and asking the top court to dismiss pleas challenging it, changed its stance on Monday, saying it had decided to review the legislation. सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आया है जो कि एक हिस्टोरिक ऑर्डर माना जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो टेम्पररी सस्पेंड कर रहा है सेक्शन 124A ऑफ IPC को, जो कि सेडिशन को डील करता है, और ये भी कहा है कि सेंटर को री एग्जामिन करना चाहिए इस सेक्शन के प्रोविजंस को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी इस सेक्शन के अंडर में जिनके केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी इस सेक्शन के तहत उनको जेल में रखा गया है, वो लोग अपने अपने बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं टॉप कोर्ट्स में। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक इसका री एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, कोई भी केसेस सेक्शन 124 ऑफ IPC के तहत रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन सेडिशन लॉ. It is clear that Centre agrees that rigors of Section 124A are not in tune with the current situation, and it was intended for the time when the country was under colonial law. Thus, Centre may reconsider it. The court is to balance civil liberty and sovereignty of the state. This is a difficult exercise, the Chief Justice of India, N.V. Ramana, said on Wednesday. He also added that the Union of India is at liberty to pass directives to states to prevent misuse of the law. The Chief Justice of India said it will be appropriate not to use this provision of law till further re-examination is over. We hope and expect that Centre and State will desist from registering any FIR under 124A or initiate a proceeding under the same till re-examination is over. Moving on to our last slide, which is conclusion part. The sedition is nothing but a defamatory mark or speech against the state or its institutions. But in recent years, India has witnessed its overuse and misuse at large scale. As the court quoted, mere policy discussion, its advocacy or disagreement or peaceful protest against the policies and actions of the authority is not sedition. The freedom of expression must be protected and encouraged by the state itself. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe, and drop your views in the comment section down.